आज का क्लास जो है दैट इज बेस्ड ऑन नरेशन. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फैमिलियर विद द टर्म नरेशन? नरेशन से कितने लोग परिचित हैं? नरेशन जानते हैं? नरेशन क्या लगता है, इस वर्ड को सुनने के बाद दिमाग में क्या आता है? हाँ, कुछ नहीं. ओके. नरेशन, the word narration is derived from a verb that is narrate. Narration is what? A noun, and it is derived from the verb narrate. Narrate is a verb. And what do you mean by the term narrate? Narrate refers to say or to speak or to tell. What it is? To say, to speak, or to tell. That means to say, कहना, to speak, बोलना, tell, बतलाना. In fact, we can avoid these two also. Tell itself stands for batlana. Understood? So when we are going to study narration, there are two types of narration. Understood? Since it is made from the verb speak, we also call it speech. Understood? So another word for narration is speech. You all are familiar with speech. When I will coin the name direct speech and indirect speech. You all know it or not? Direct speech and indirect speech. What is direct speech? What do you mean by the term direct speech? Anyone? No. Okay. Direct, when we report the words of the speaker as it has been said without making any change, it is called direct speech. जैसे भाई किसी ने कुछ कहा और मैंने उसके शब्दों को ही उसके ही उसने जैसे कहा बस वैसे ही लिख दिया, दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच. लेकिन जब उसने कुछ कहा and what we did, we took out the meaning of that idea of that statement and reported it in our own words, then it is known as indirect speech. Understood? हम लोग प्राय न्यूज में देखते हैं ये सब घटनाएं होती रहती हैं कि फलाने आदमी ने कुछ कहा, अब उसके शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, है ना. जैसे किसी ने कुछ कहा कि हाँ भाई मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज नहीं पसंद है. अब अगले दिन अखबार में खबर छप जाए, ये आदमी इस तरह की चीजों को नहीं पसंद करता, ये उनसे नफरत करता है. दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. यहां करना क्या है, डायरेक्ट स्पीच में हम सिंपल एज इट इज जैसे उसने कहा वैसे लिख देते हैं. जैसे अगर हम कहें कि ही सेड टू मी, he said to me, I will help you whenever you require. What did it say? I'll help you whenever you require. So this is written as in the words of the speaker. Whatever speaker has said, it has been written in the same way. I'll help you whenever you require. Is it okay? But when we transform it, we say he said to is transformed into told me that he would help me whenever I required. Understood?
He told me that he would help me whenever I required. So that is in indirect speech. ये पहला जो स्टेटमेंट है ये किस स्पीच में लिखा हुआ है बच्चे? डायरेक्ट में। और ये किस में है? समझ में आया? ऐसा नहीं कि इसको अब अपने तरफ से कुछ और बदल देना, है ना? He said to me, I will help you whenever you require. हाँ, किसी और को बता रहे हैं उस समय इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है टेंस को समझने का, वो है नैरेशन। अगर आप इस पे प्रॉपर फोकस करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और सारा खेल सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स के चेंजेस का है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दो तीन चीजें हैं जिसके ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरा का पूरा नैरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है, और हम लोग वो बारी बारी से हर एक केसेस को पढ़ेंगे। इसमें भी अलग अलग केसेस आएंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग केसेस आएंगे, तो हम लोग इन सब चीजों को डिटेल में प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हुए इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट भी करते चलिएगा ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब देखो, हमने दो तरह से सेंटेंसेस कही। एक में क्या हुआ, जब पहले सेंटेंस को हम देखते हैं, इसमें क्या था कि जैसे ही किसी ने कुछ कहा हमने उसके शब्दों को उसी के शब्दों में लिख दिया, और दूसरे केस में हमने क्या किया, उसके मीनिंग को समझते हुए उसमें जरूरी चेंजेस किए और उसको अपने शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति को क्या किया, बतला दिया। तो जब हम ऐसा करने में सक्षम हो पाए तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? समझ में आया? बातें दो तरह से, या तो डायरेक्टली कह दो या फिर इनडायरेक्टली कह दो। समझ गए? तो हम लोग इसी चीज पे अब फोकस करेंगे और इसको समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो, रूल्स फॉर चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखो, सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और उसमें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर रहता है। ठीक है, तो आप कोशिश इससे करो। फिर इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन चूंकि आप सारे के सारे एस्पिरेंट सीबीएसई के हैं तो इट इज फॉर योर हेल्प, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप बेसिक्स को समझ गए, then in that case you will be able to solve all those questions which will come to you. Understood? There wouldn't be any problem in solving any of the question. Once you will look at the question and immediately you will start solving. But what you have to do, you have to follow step by step instruction. Okay, you will have to follow step by step instructions. Is it clear? Now, I'm going to take another board. So while we are changing direct speech into indirect speech, there are certain terms which we must be familiar with. Like, the first statement was, he said to me. Can anyone repeat the sentence? He said to me, I will help you whenever you require. I'm going to discuss each and everything in detail. Understood? The first statement, he said to me, the first line. Listen, the first part, he said to me. This is known as reporting part. Which part? Reporting part. What do you mean by the term reporting part? इसमें वो है जो कह रहा है और इसमें वो भी है जो सुन रहा है। ठीक है, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को कोई घटना रिपोर्ट कर रहा है, कोई बात रिपोर्ट कर रहा है, चुगली कर रहा है। चुगली करना इज नेगेटिव वर्ड, वी कैन से वो डिस्कस कर रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई अब ये जो पार्ट है, आई विल हेल्प यू व्हेन एवर यू रिक्वायर, इस कंडीशन में ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज ऑल्सो नोन एज reported speech. Always remember, reported speech could be of any type of tense. It could be an assertive sentence,
a negative sentence, an interrogative sentence. It could be an interrogative with negative sentence. It could be an imperative sentence. It could be an optative sentence also. ये कई तरह के sentences में हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा sentences beginning with let, ऐसे भी केसेस आएंगे. आपको हर एक तरह का पैटर्न आप समझ, अगर आप समझ जाओगे, you will be able to solve each and every pattern very easily. Understood? Now, over here, the first term, what we call this, he. It is the speaker. He said to me. In this sentence, it is what? Subject. Now remember, the another word, said. Said refers to, said is a verb. Which verb it is? What we call this verb as? This verb is known as, since it is reporting part, this verb is reporting verb, not reported. Reported or reporting, both are different. Reporting जो होगा, आप समझ लो वो एक्टिव सेंटेंस है. रिपोर्टेड मीन्स समवन हैड सेड. अंडरस्टूड? वो रिपोर्टेड जब आ जाएगा तो वो इसका पार्ट होगा, रिपोर्टिंग होगा तो वो उसका पार्ट होगा. ठीक है. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, व्हाट इट इज, ही सेड टू मी. सो सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस मी, he is the receiver of the action, he is the listener, it is object. Are you familiar with subject, verb and object? Sentence is complete. Is the sentence complete? No. The reported part is there, separated by comma and inverted comma. Comma and inverted comma. Now, there is another subject, but what it is? Subject of, we can say, subject of, this is what? Subject of reported speech. Is it? Now, what it is? Verb of reported speech. Similarly, here is another verb of reported speech. This is object. Okay? So you all are familiar with the terms now. Now there are certain rules which you must keep in mind while solving the rules of narration, while transforming the sentences from direct speech to indirect speech. जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होगे तो कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, करना चाहिए भी. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप समझिए. जैसे सबसे पहले जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप कई तरह के चेंजेस करते हैं. सबसे पहला जो चेंज करते हैं वो करते हैं चेंज ऑफ पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है. आप किस में चेंज लाते हैं? चेंज ऑफ पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. जो चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन मीन्स जो सब्जेक्ट है या वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो किस पर्सन में, वेदर इट इज इन फर्स्ट पर्सन I or we, whether it is in second person you, or in third person he, she, it, name or they. Understood? So change of person of reported speech. The second thing is you must keep in mind, that is change of tense of reported speech. Understood? Change of tense of reported speech. Understood? You are going to change the tense of reported speech also. Suppose that this is I will help you. I will help you. Which tense it is? It is simple future. Simple future. Understood? Or we can say it is giving a future time reference. Very simple. The third thing is change of other parts of speech. What it is?
change of other parts of speech, like change of pronouns. Understood? Like change of uh, different sorts of pronouns are there, demonstrative pronoun, distributive pronoun. We are going to change them also. How demonstrative pronouns will be changed, how words which are used to show nearness can be changed. So these are the things which we will be changing. So these all changes will occur in which part? These changes will always occur in the part of. Now what about reporting part? Will there be any change? There will be a change. Many a time we forget this change, and that is in reporting part, we have a change of verb. What is it there? Change of verb. And this change of verb occurs, this is a basic problem where students make mistakes, and as a result, although they make the entire sentence correct, but since they have not changed the reporting verb properly, as a result their marks get deducted. Why to make that mistake? If we will remember what are the different rules of transformation of verbs from one form to another, that is of reporting verb, in that case we can easily do it. And on what factors these verbs depend, these change of verbs depend? The first is type of types of sentence of reported speech. The change of verb depends upon type of sentence of reported speech. Understood? The second thing is tense of verb of reported speech. It also depends upon tense of verb of reported speech. No, it depends upon tense of verb of reporting part. Means what is the tense of reporting verb, then it will change according to you. And the third important change occurs in case of assertive sentences, that is whether there is an object or not. Understood? If there is an object, the verb will change differently in case of assertive sentences of reported speech. If the verb is in different case, then change will be differently. Understood? So now we are going to see the first type of change of person of reported speech. First type of change is change of person of reported speech. You all are familiar with pronouns? You all are familiar? What is a pronoun? A pronoun is a word that is used in place of a noun. Is it okay? Okay. There are different kinds of pronoun. You might be familiar with personal pronoun. You know what is a personal pronoun? I, we, he, she, it, they, you, they all are personal pronouns. But what is their structure? I'm going to give detail of that also. We have three persons here: first, second, and third. Also, we have different numbers. How many numbers are there in English? Two. In Hindi, we have different ekvachan. In Sanskrit, in fact, ekvachan, dvivachan, bahuvachan, Amitabh Bachchan. अच्छा अमिताभ बच्चन नहीं अच्छा कोई बात नहीं in English there are two only. What are they? Singular number, and the second is plural number. What it is? Plural. बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इस वर्ड को बोलने में. Just break it into two words: plural. Plural. Singular and plural. First person is the speaker, and we have two pronouns in first person: I as singular number, we as plural number. Understood? Similarly, second person is listener, and we have only one pronoun which can be used in either way. It can be used as singular
you, and it can also be used as plural. Again, you. Similarly, third person is one who is the part of the, yeah, one who is discussed about. One who is discussed about. It could be he, she, it. Since we are discussing pronoun, if there is a noun, it will be kept over here only. But if we are using it plural, as a plural, it would be they. If there would be a noun, it will fall under the category of what? Third person. Understood? So these are the different pronouns. Now, how many cases of pronouns are there? How many cases of pronouns are there? Yes? Anyone? Two, three. Okay. Anyone else? Yes, pronoun has three cases. The first case is, think a situation. What do you mean by case? In what manner a pronoun can be used in a sentence that defines the case? If it could be used as a subject in a sentence, it is said to be in subjective or nominative case. Understood? The first is subjective or nominative case. If it is used as a subject, then it is also said to be in nominative case. जब अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो क्या केस होगा इसका? नॉमिनेटिव होगा. दूसरा जो तरीका है, वी कॉल इट एज एक्यूजेटिव, या फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. कौन सा केस कहते हैं? नॉमिनेटिव को एक नाम हमने दिया सब्जेक्टिव. जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज में आएगा तो नॉमिनेटिव केस, और जब अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस. तो भैया आप तीसरा वाला केस कौन सा है? यस, दैट इज नोन एज जेनेटिव केस. जेनेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज पॉजेसिव केस. पॉजेसिव मीन्स शोइंग ओनरशिप. भाई मैं मालिक हूं, मैं किसी चीज को होल्ड करता हूं, तो वो पॉजिटिव केस है, जेनेटिव केस है. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ना कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में. तो मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ बता दूंगा. सबसे पहले पॉजिटिव में हम लोग एडजेक्टिव को लेके चलेंगे, और फिर दूसरी साइड हम लोग क्या लिख देंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन. अब गौर कीजिएगा, इस टेबल में लिखे गए जितने प्रोनाउंस हैं सब के सब नॉमिनेटिव केस में है. अंडरस्टूड? सब के सब किस केस में है? आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर दे हो. ये सब के सब किस केस में है? यानी कि सब के सब सब्जेक्ट के तौर पे यूज में आ सकते हैं. ठीक है. अब अगर इनका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएं, यानी आई जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? मी बन जाएगा. वी जो है अस बन जाएगा. यू जो है वापस यू रह जाएगा. इसका सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है. वैसे ही का हिम, सी का ह, इट का इट, और दे का देम. ओके. नाउ when we are using it as possessive pronoun, I will become my. As an adjective, sorry, I will become my, and as a pronoun it will become mine. Understood? What is the difference between a possessive adjective and possessive pronoun then? Always remember, possessive adjective will always be placed before a noun. जैसे my car, my pen, my book. But possessive pronoun will be placed after a verb or after that noun. This book is mine. Understood? This pen is mine. Similarly, we will become our as a possessive adjective and ours as possessive pronoun. You will become yo as possessive adjective
and yours as possessive pronoun. Similarly, he will become his. It will remain same as a possessive pronoun also. She will become her in possessive adjective and hers in possessive case of pronoun. It will become its in positive possessive adjective. Remember, there is no any possessive case of pronoun it. Understood? That's why we make a cross mark over here. Similarly, they will become their and theirs. Okay, there is another confusion with the students. Sometimes they find it quite difficult to pronounce this word, their and. Remember, this word is pronounced as their, and this word is pronounced as their. Their and their. Understood? This is the difference in pronunciation of these two words. Okay. So these are the different sorts of change of cases of pronoun. We are familiar with cases of pronoun. We are familiar with types of pronoun, types of personal pronoun. Now, what type of changes will be there? As I have mentioned, change of person. What type of change? Remember, when we are going to change the pronouns will change in this format: one, two, three. What is that? Change of person. I'm writing it what it is: one, two, three. We will write over here SON. Understood? One, two, three, SON. Make a group. One refers to first person according to subject. Two and O, second person according to object. Third person, does not have any change. Understood? No change. Is it clear? Change of first person according to subject, second person according to object, and third person has no change. Is it clear? First person according to subject, second person according to object, and third person has does not have any change. Like he says to me, he says to me, I am your friend. He says to me, I am your friend. Now think, he, this is the subject, says to. Remember, don't ever try to change the tense of the reporting verb. Never ever change the tense of the reporting verb. Whatever the condition is, never ever change the tense of reporting verb. If it is says to, that is in present tense, leave it in present tense. If it is in past tense, leave it in past tense. Understood? If it is giving future time reference, leave it giving future time reference. Don't ever change the tense of reporting verb. Is it clear? Never ever change the tense of reporting verb. Then what type of changes will occur in the reporting verb? Remember, if you look at the type of sentence, what type of sentence it is? It is a statement. It is a statement. If there is a statement, and the second thing which I have told you to remember, that was, is there any object or not? There is a receiver of action to me. Is there any receiver of the action or not? To me. Understood? If there is a receiver of action, says to will change into tells. I have right now said,
Don't change the tense. Sage 2 will change into, if the reported speech is a statement, sage 2 will change into tells. Similarly, said 2 will change to told. This is the error which you do and which you were doing continuously. Said 2 will change into, say 2 will change into tell. Don't add s. Say 2 will change into tell. Said 2 will change into told. Says 2 will change into tells. Sage tells. Say tell. Said told. Is it okay? If there is no object, suppose that there is a statement, he says, I am a good boy. He says, I am a good boy. This is also a statement, but there is no receiver. There is no receiver. The verb will remain same, says. Understood? So in the first case, says 2 is there. Says 2 will change into tells. Says 2 किस में बदलेगा? Tells में. और tells के बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा आ गया मी. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा. अगर स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टेटमेंट है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमको एक कनेक्टर हमें एक डालना होगा. वहां पे एक कनेक्टर डालना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन डालना होगा, जो दोनों सेंटेंसेस को क्या कर सके, जोड़ सके. ठीक है. और उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद यूज करेंगे. अगर ये स्टेटमेंट है तो, अगर ये स्टेटमेंट है तो हम लोग यूज करेंगे दैट का. किसका? अगर इंट्रोगेटिव होता तो इफ या वेदर का, या फिर अगर WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता तो सेम WH वर्ड को वहां रख के छोड़ देते. अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कुछ केसेस में टू का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग. ठीक है, समझ गए. इंपरेटिव विथ नेगेटिव है तो टू, नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं. तो हर एक केस में ये कनेक्टर बदल जाएगा. तो ही टेल्स मी दैट. नाउ एज आई हैव मेंशन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. I is first person or second person or third person? First person. According to subject. Subject is what? Subject is what? Subject is what? He. We have to change according to subject. He. Now, what is the case of this subject? What is the case of this subject? Nominative case. What is the case of this subject? Same case is there. We do not need to change. We will write the same word. So I will turn according to the first person will change according to subject. First person will change according to subject. And what is the subject? He. Since first person is in nominative case, we will use the same nominative word here over here. He. Now, since the reporting verb is in present tense, we are not supposed to change the tense of the reported speech. So what we will write is, since am is there, with I am can be used, but with he we are supposed to use is. We cannot use am. है ना? He am going तो नहीं कह सकते हम लोग. He is ही कहेंगे. अब देखो your. Your क्या है? किस पर्सन में है? सेकेंड पर्सन में है. केस क्या है इसका? पॉजेसिव क्या? एडजेक्टिव या प्रोनाउन? एडजेक्टिव. हम सेकेंड पर्सन हम इसको देख रहे हैं. सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार. इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी. मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? माई होता है. ही इज माई फ्रेंड. बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था, बन गया. सिमिलरली इसको बनाने की कोशिश करेंगे दूसरे वाले को. ही सेज. मैंने पहले ही बोला ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे वर्ब है वैसा ही लिख दो. अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो, रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट है तो ही सेज. उसके बाद क्या करेंगे? दैट लगा देंगे. आई को फिर चेंज करना है. फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट ही है. ही. वर्ब हमारा किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में. वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है. यहां क्या लगा देंगे?
अ गुड बॉय, बाकी चेंज नहीं होगा, हो गया काम खत्म। तो सबसे पहला केस हमारा क्लियर हुआ, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में अगर डाउट है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, second according to object, third person does not have any change in it. Is it okay? First person according to subject, second person according to object, third person does not have any change. Is it okay? क्लियर है? नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। अच्छा, अब एक केस और आता है हमारा, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, अभी मैंने सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का टाइप बताया है, धीरे धीरे कुछ और क्लासेस में हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस जो होंगी। तो चेंज ऑफ टेंस की बात अगर हम करें, तो चेंज ऑफ टेंस जब हम बात करते हैं, चेंज ऑफ टेंस जो होता है ना, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे। चेंज ऑफ टेंस जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। याद रखिएगा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is in present tense, किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, there won't be any change in the tense of reported speech. क्लियर है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पिछले दो एग्जांपल्स में आपने देखा, ही सेज टू मी या ही दे से टू मी, अगर इस तरह का टेंस रहेगा, दे विल से टू मी। तो ये याद रखिएगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is in past tense, is in past tense, the change of reported speech, the change of reported speech will be as under। अगर टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस है, यानी कहने का मतलब अगर इसमें से है, सेज है, हैज हैव सेड है, ठीक है, इज एम आर सेइंग है, तो याद रखिएगा वर्ब कभी भी टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसमें से कोई भी रहा, से, सेज या विल से, हैज हैव सेड, इज एम आर सेइंग, ये सब अगर रहा तो वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी कहने का मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, हैड सेड है या वाज वर सेइंग है, ठीक है, वाज वर सेइंग है, तब रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करेगा, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करेगा, यह समझना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसको बदल के किसमें लेके जाओगे? बहुत सिंपल, सिंपल पास्ट में। ठीक है? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है
वेरी गुड। ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, वेरी गुड, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर सिंपल पास्ट है तो ये बदल जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट यहां से आया तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और लास्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कोई दिक्कत? ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इसको याद कर लिया टेबल को। सिंपल प्रेजेंट इंटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटू प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, present perfect into past perfect, present perfect continuous into past perfect continuous, simple past into past perfect and past continuous into past perfect continuous। सबने याद कर लिया? कर लिया? हो गया? भूल जाओ। क्या करो? क्योंकि जिंदगी भर याद करते रहोगे, रटते रहोगे, जब यूज करना होगा भूल जाओगे। बेस्ट पार्ट है, जब आपको यूज करना होगा आप इसको भूल जाओगे। सारा रूल रेगुलेशन वही जो कॉपी आपने नोटबुक में जो लिखा है बस वहीं रखा रह जाएगा। तो इसको किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो। कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? अगर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में। चेंज नहीं करना है, ये तो पता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो चेंज कैसे करना है ये आपने देखा, लेकिन उसको देखने से समझने से अच्छा है हम दूसरे तरीके से उसको जान लें। मैंने पहले ही समय में शुरुआत में ही बताया था कि ये सारा का सारा खेल किसका है? वर्ब्स का है। तो हम इसको वर्ब्स के तौर पे ही क्यों ना समझे कि समझना ज्यादा आसान हो। इज इट और नॉट? इसको वर्ब्स के तौर पे समझना ज्यादा आसान होगा। और कैसे समझेंगे वर्ब के तौर पे? जैसे अगर मान लिया जाए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, जिसको हम लोग, हालांकि वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म कुछ होता नहीं, प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म में है या प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म में है। V1 प्रेजेंट टेंस प्लूरल हो गया, V5 प्रेजेंट टेंस सिंगुलर हो गया। तो V1 या V5 में अगर है तो इसको तुरंत बदल करके वर्ब के सेकंड फॉर्म में ले आओ, V2 में। V2 मेगा मार्ट वाला नहीं, वर्ब का सेकंड वाला फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वर्ब है हमारे पास डू, है ना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म क्या है इसका? इसको पास्ट टेंस में जब भी कन्वर्ट करोगे तो डिड बन जाएगा। समझ गए? क्या हो गया? V1 या V5, V2 में तो डू या डज। समझ गए? अच्छा, अगर कहीं आपको इज एम आर लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए? इज एम आर, इसको वाज और वर में बदल दो। इज एम आर है, इसको बदल दो किसमें? वाज और वर में। अगर हैज और हैव है, हैज और हैव है, इसको बदल दो हैड में। ठीक है, हैज हैव को बदल दो हैड में। और कुछ तो हम लोग बदल नहीं सकते, तो इसी को बदल के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो ठीक था। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि हमको वर्ब ही मिल जाए डेड, कहने का मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यही हमको मिल जाए, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हैड लगाना है और हैड के साथ V3 लगा देना है। ठीक है, समझ गए? आई डिड इट, ही हैड डन इट। ठीक है, ही हैड डन इट। सो हैड प्लस V3,
अगर यहां वाजवर हो जाए तो इसको लगाना है हैड के साथ, और हैड के साथ verb का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना हम लोग। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि बीन होता है ना। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड बीन लगा दी है। लेकिन हैड बीन के बाद वर्ब कौन सा लगेगा? जिसको हम लोग V4 कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा कुछ मॉडल ऑक्सिलियरीज भी हैं हमारे पास। जैसे एक हमारा है सैल और विल, है ना। इसको बदल दो शुड और वुड में। किसमें बदल दो? शुड और वुड में। कैन को बदल दो कुड में। मे को बदल दो माइट में। कोई दिक्कत? और कुछ बच गया तो बताओ। आई डोंट थिंक सो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेज हो गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस पे सॉल्व करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक आध एग्जांपल लेते हैं। पहले वर्ब को प्रेजेंट टेंस में रख के चलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। जैसे दे विल से, दे विल से, वी विल go there. They will say, we will go there. They will say, we will go there. What does, what we will change it into? They will say. As I have already said, there wouldn't be any change in the reporting verb of the reporting verb if the tense is in present tense and if there is no object. They will say. Comma or inverted comma will be replaced with that. Now, we is what? First person number, plural. First person number, plural. Case, first person changes according to, there is only one subject over here. So we will change into they. Will remain same. They will go. There. Okay. Now I would like you to solve one question. He says to me, Varun is my best friend. Who's going to change? He says to me, Varun is my best friend. Yes, go ahead. Anyone? Huh, please. Very good. He says to is converted into tells. Sit down. Me, as it is, it has been written. Comma, inverted comma is replaced with that. Now, why not Varun has been changed with some other pronoun? Because third person does not have any change. So Varun is. Now, my. My is a first person possessive adjective. First person changes according to subject he. And what is the possessive adjective form of he? His. Varun is his best friend. Very good. One more question.
I shall tell them. I shall tell them. You need my help. Who is going to change it? I shall tell them. Yes, please. I shall tell them. Comma inverted comma will be replaced with that. You, second person according to object. Object is them. You is in subjective case. What is the subjective case of them? They need my help. Okay, is it okay? Now let us do some questions in which reporting verb is in past tense. Okay, now reporting verb is in past tense. She said to me, I want to help you and your friends. Go ahead. Yes, you. Go ahead. See. Why told? Said to is there. There is an object me. So she told me that she. I first person according to subject. Subject is she. Cases is nominative. So she. Want is the first form of the verb. It will get converted into second form. Want will become wanted. सलमान खान वाला नहीं, एंजेलिना जॉली वाला तो बिल्कुल नहीं. सी वांटेड टू हेल्प. अच्छा, टू हेल्प क्यों नहीं चेंज हुआ? कोई बताएगा? टू हेल्प क्यों नहीं चेंज हुआ? उसमें भी तो वर्ब वन है. यस, देयर इज अ थिंग infinitive, यानी कि infinitive belongs to a case of non-finite. Please sit down. Infinitive belongs to the case of non-finites, and non-finite verbs are those verbs which does not change its structure in any condition. Understood? So she wanted to help you. You is the second person. Second person according to object me. Now you is already in objective case and me is also in objective case. To help me. And now look, your that is possessive adjective. Me, for me, my, it will become into my friends. Okay, so are you familiar with these cases? Any confusion? There is any confusion? Okay, if you have any question you can ask anyone. Anyone, if anyone is having any question they can ask. Go ahead. No one? Okay, there is someone who has asked what is possessive adjective. Okay, possessive adjective shows ownership and it is always placed before a noun. Likewise, if we say
My car. My car. Car is the noun, and before that noun, the adjective my is used. This is possessive adjective. It is used to show ownership. Understood?